पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। तवज्जो कारोबारी रवाबित, सरमाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को इलाके रवाबित के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। कहते हैं कि ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाके रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इंकलाब आएगा। From the ancient Silk Route, today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. Pakistan's long coastline also makes our ports of Gwadar and in future many other potential ports on this coastline, including Karachi, as key transit points on the maritime Silk Road. CPEC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia and the Middle East. We are now entering into the second and very exciting phase of CPEC 2.0. We are also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad, Tehran, Istanbul connectivity. And this opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. I am confident that these mega projects synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation and energy collaboration in the region.